और मैं उनका एक बार वापस इस प्लेटफॉर्म पे सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, इस पे आप सभी का एक बार वापस स्वागत करता हूं। और विशेषकर हम स्वागत करते हैं, आज हमारे व्याख्यानकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप कुमार जी पांडे, जो वर्तमान में हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संज्ञाहरण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस वाराणसी में। और हमारे बीच में थोड़ी देर में हमारे वाइस चांसलर साहब भी अभी जुड़ने वाले हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे तो हम उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे। तब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि सर माननीय कुलपति महोदय के विजन से हमारे बीच में प्रोफेसर कुलदीप कुमार पांडे जी जुड़े हुए, मैं उनको बताना चाहूंगा। वैसे तो हमारे सभी साथी जो जुड़ते रहते हैं वो जानते ही हैं कि ये जो हमारा सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, ये हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी का एक विजन था। और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने इसकी संकल्पना पे काम करना शुरू कर दिया था। और जनवरी 2019 में जनवरी 2020 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और मुझे इसका उन्होंने जो है जिम्मा सौंपा था। तो जो है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज हम उसके निरंतर प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम निरंतर लगभग 100 के आसपास, 100 सवा 100 के आसपास, अभी संख्या एग्जैक्टली मैंने नोट नहीं की है, पर 100 से ज्यादा हमने लेक्चर ऑर्गेनाइज किए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। मैं माननीय कुलपति महोदय का हमारे इस व्याख्यान में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपकी प्रेरणा से ही ये जो है हमारा CHRD का जो सेंटर है लगभग 100 से ज्यादा जो है व्याख्यान आयोजित कर चुका है। और आपका जो एक विजन है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम अपने देश भर से जो उपस्थित जो हमारे जो श्रोतागण हैं, जो ज्ञान पिपासु श्रोतागण हैं, उनको हम सर का जो आज लेक्चर है कैंसर पेन मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव इन आयुर्वेदा, इस पे हम आज उनका व्याख्यान आयोजित करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हमारे माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन देकर के अनुग्रहित करें। सर, माननीय कुलपति महोदय से। थैंक यू डॉक्टर राकेश जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पांडे जी, और जो भी फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर राकेश जी को कि एक कार्य जो उन्होंने शुरू किया, एक दशक, एक शतक जो है वो लगा दिया उन्होंने लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करके, और एक बहुत ही अच्छी सीरीज इनके द्वारा चलाई गई जो हमारा सेंटर है, सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए हर जो है तरीके के सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के साथ, डिफरेंट डायमेंशंस के साथ देश के विद्वान थे, चाहे वो जो हमारे सीट्स हैं उनके एक्सपर्ट्स हों, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स हों, टेक्नोलॉजिकल टीम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस के हों, तो एक सबका एक समन्वित जो एक नॉलेज कप के हमारे सेंटर ने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं राकेश जी और उनकी टीम को एक बार बधाई देता हूँ और उन्हें एक बार स्वागत करना चाहता हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय का। प्रोफेसर पांडे जी का व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग हटके है बाकियों से, क्योंकि एक सब्जेक्ट में एक सेल्फ मेड मैन है। असल में जब आए और उसके बाद जब संज्ञाहरण गए और उसके लेके चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जॉब में आने के बाद एक जो
निरंतर एक अनवरत प्रक्रिया और जो जर्नी इन्होंने की, उस जर्नी में बहुत सारा कुछ नवीन भी किया, कई सारे और उन सबका नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, अग्रणी व्यक्तियों में आपका नाम गिना जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा अलग हटके है, अलग हटके भी है और हमारी स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है कि आयुर्वेद में जब हम डिजीज की बात कर रहे हैं या रोगों की बात कर रहे हैं, तो सबसे मूल मैं समझता हूँ कि ज्वर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसको दिया गया वो सूल को दिया गया। और मॉडर्न का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ पे हम डिजीज की बात करते हैं तो डिसीज मीन्स कंफर्ट नहीं है, और कंफर्ट ना होने का ये बहुत सारे कारण हैं। और उन कारणों में एक ऐसा कारण जो जिससे कि विश्व का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है, वो है पेन। किसी न किसी रूप में हर एक ने पेन महसूस किया है, उसकी इंटेंसिटी महसूस की है, कारण कोई भी। तो ये एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम है पेन, और पूरा विश्व इस पे बहुत सारा काम हो रहा है पेन मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन जो आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन है, जो आयुर्वेद की एक सिद्धांत है पेन मैनेजमेंट के लिए, वो बिल्कुल एक अच्छा है और इसको हम कहीं पे भी कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही एक ऐसा एरिया को हम कैंसर के रूप में बात करते हैं, और उस कैंसर में जब टर्मिनल स्टेज या उससे पहले की भी स्टेज जो भी होती है, तो पैलिएटिव केयर में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू होता है वो पेन मैनेजमेंट का होता है। और उस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को रिलीफ दे पाते हैं तो शायद इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। आज पूरा विश्व, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ वर्ष यूएसए के नेशनल कैंसर सेंटर के जो डायरेक्टर थे, वो आयुर्वेद से केवल इसी बात पे फैसिनेट हुए थे कि आयुर्वेद में कुछ ऐसा है कि जो पैलिएटिव केयर के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, और उसमें एक पेन मैनेजमेंट। आज बहुत ही एक ऐसा टॉपिक आज हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि जिसका इम्पैक्ट केवल एक हॉस्पिटल या क्लिनिक या एक कंट्री ना होकर ग्लोबल है। और हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल में हों या क्लिनिक्स में हों, पेन मैनेजमेंट तो एक ऐसा इशू है कि हर एक उसको फेस करना होता है। और आज विद स्पेसिफिक डिफरेंस टू कैंसर जरूर है, लेकिन जो उसके पीछे जो बेसिक फंडामेंटल्स की बात की जाएगी, मैं समझता हूँ कि उनका उपयोग करके कोई भी चिकित्सक पेन मैनेजमेंट में अपनी कुशलता आज हमारे विशेषज्ञ हैं इस पे ज्ञान भी देंगे, दिशा निर्देश भी करेंगे, और कई सारी जो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बेस पे एक बड़े स्ट्रॉन्गली और एक अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से जो ये पेन मैनेजमेंट प्रैक्टिकली हॉस्पिटल पेन मैनेजमेंट क्लिनिक में इस्तेमाल। थैंक यू। सर नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर। तो आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, और ये सेंटर इसी तरह से नए नए नवाचार स्थापित करता रहेगा। और इसी क्रम में मैं आज आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में कुलदीप कुमार पांडे जी सर के वो अपना व्याख्यान दें। इससे पहले मैं उनका वो अपने आप में
आयुर्वेद में संज्ञाहरण की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं पूरे हिंदुस्तान की। तो मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ संज्ञाहरण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी में कार्यरत हैं। और आपका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो संज्ञाहरण, एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर, इस पे आपका विशेष जो है इंटरेस्ट रहता है। आपका जो है आपने BMS किया है राजस्थान से। हमारा सौभाग्य है कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से BMS करके यहाँ से गए हैं 87 में। उसके बाद आपने BHU से MD किया था 91 में, और BHU से ही आपने PhD किया 1994 में, और डिप्लोमा योग बनारस यूनिवर्सिटी से 1992 में आपने किया। सर आपका टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 32 इयर्स का है। सच ए वाइड एक्सपीरियंस है सर आपका। इसके अलावा आपके अंडर में अभी रिसर्च कर रहे हैं PhD के 11 स्कॉलर हैं, जिनमें से 8 अभी स्टडी कर रहे हैं। MD और MS के 28 स्कॉलर आपके अंडर MD कर चुके हैं, और PG डिप्लोमा संज्ञाहरण के आपके अंदर 18 स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स ने आपके अंदर किया है, जिसमें से 2 अभी परसू कर रहे हैं। आपके 110 रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। चैप्टर्स आपने बुक्स में 4 चैप्टर्स लिखे हैं, जिनमें आपके ओरेशंस 10 हैं। आपको 4 अवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं, और आपके 14 कीनोट लेक्चर्स हो चुके हैं। आपने 22 नेशनल और 7 इंटरनेशनल और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया है, और इसी प्रकार 80 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और 8 CME आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इसके अलावा आपने जो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और सिंपोजिया और वर्कशॉप्स जो होते हैं वो जो अटेंड किए हैं, अराउंड 120 आपने अटेंड किए हैं। आपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस में। करीब 85 लेक्चर्स आपने प्रेजेंट किए हैं, और आपने करीब 100 से ज़्यादा आप गेस्ट लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। मैनी साइंटिफिक सेशंस नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, उसको आपने चेयर किया है या को चेयर किया है। और आप नेपाल और श्रीलंका की विजिट कर चुके हैं विदेशों में। और इसके अतिरिक्त आपका जो रिकॉग्नाइजेशन है साइंटिफिक सोसाइटीज में, उसके अंतर्गत आप एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडियन मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके आप एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं 2010 से 2015 तक। आप एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी स्टेट ब्रांच के पैटर्न रहे हैं। संज्ञाहरण शोध जो जर्नल है AAIM का, उसके सिंस 1999 से एसोसिएट एडिटर रहे हैं। आप जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन के एडिटर एक्सपर्ट हैं संज्ञाहरण में। इसके अलावा आप AAIM जो हमारा जर्नल है इंडिया का, उसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आप नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन इंडिया के लाइफ मेंबर हैं। आप भारतीय चिकित्सक शिक्षक संघ इंडिया के लाइफ मेंबर हैं। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के आप लाइफ मेंबर हैं। एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडियन मेडिसिन इंडिया, उसके आप लाइफ मेंबर हैं। नेशनल सुश्रुता एसोसिएशन इंडिया, उसके लाइफ मेंबर हैं। ऑल इंडिया आयुर्वेद स्पेशलिस्ट PG एसोसिएशन इंडिया, उसके लाइफ मेंबर हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा इंडिया, उसके लाइफ मेंबर हैं। और एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पेंसिल्वेनिया USA, उसके आप लाइफ मेंबर हैं। आपका जो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आप पोटेंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड सेफ हर्बल ड्रग्स, इनको संज्ञाहरण और पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर में कैसे यूज किया जा सकता है, इसके बारे में आप काम कर रहे हैं। और आपके जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है कैंसर पैलिएटिव केयर थ्रू आयुर्वेदा, आपका जो स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो आपका जो कैंसर पेन मैनेजमेंट विषय पे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हर जगह है, पर आपका जो कैंसर पेन मैनेजमेंट में जो स्पेशलाइजेशन है, उस पे आज आपका निश्चित रूप से हमारे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान मिलने को मिलेगा। ज्ञान से भरा हुआ व्याख्यान सुनने को मिलेगा। मैं आपको बहुत बहुत जो है विनम्र निमंत्रण करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आप प्लीज आएं और आज हमारे श्रोताओं को जो है कैंसर पेन मैनेजमेंट के बारे में बताएं। प्रोफेसर के पांडे सर। थैंक यू डॉक्टर राकेश जी। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु, अग्रज, बड़े भाई, मेरे मेंटर
प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर को नमन करता हूँ, और सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पर सीताराम जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। आज के अवसर पर एक्चुअली ये प्रोग्राम शिक्षक दिवस के दिन होना था, और मैं आज भी वही मान के चलता हूँ कि शिक्षक दिवस सप्ताह है। किसी शिक्षक के, गुरु के सानिध्य में अपना वक्तव्य देना एक बहुत ही दुरूह कार्य है। मैं अभिमन्यु सर के समक्ष सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, जो अभी नहीं है लेकिन हमें मेंटर में बनाकर ऊपर से कहीं देख रहे हैं, प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आवाज आ रही है। आई एम ऑडिबल? राकेश जी, मेरी आवाज जा रही है? हेलो राकेश जी, नहीं जा रही। सर आपकी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। ये मैं सीताराम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं सर, आप अपना माइक जो है उसको म्यूट रखें सर, आप अनम्यूट ना हों प्लीज बार बार। सीताराम जी मेरे बैचमेट रहे हैं सरदार शहर में जब मैं पढ़ता था। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सीताराम जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। My dear friends, today's topic is very challenging to all medical attendants. Challenges and perspective of pain management in current scenario and what Ayurveda can contribute. I will try to share my experiences regarding the topic, and simultaneously would like to seek your advices regarding the matter. सबसे पहले मैं महामना जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षण संस्थान का संस्थापना करके उस समय जब सोचा कि इंटीग्रेशन इज द नीड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल आना है, और उनका एक संदेश था, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्गम। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करूंगा। महामना जी जब अंतिम समय में थे, महात्मा गांधी जी मिलने आए और बोले, पंडित जी अब आप विश्राम करिए, भगवत चिंतन करिए, समाज और उसके बारे में बहुत मत सोचिए। महामना ने हंसते हुए कहा कि बापू, मुझे और कोई चिंता नहीं है, मुझे एक वो छोटा सा गेट बता दो, वो रास्ता बता दो कि जिसके रास्ते से मैं घुस करके समाज के लोगों के दिल तक जाऊं और उनकी पीड़ा को समझ सकूं। ये थे महामना जी, जिन्होंने इतनी बड़ी शिक्षण संस्थान का नींव डाला, सिर्फ इसलिए कि जो शिक्षक यहाँ से निकले, शोधार्थी यहाँ से निकले, वो समाज की पीड़ा को समझे और समझने के बाद उसमें पीड़ा को ओढ़ते बिछाते हुए वो आगे कार्य करता है। तो जब भी मैं इस गेट से अंदर चलता हूं तो मुझे
वो कथा याद आती है, फिर सोचता हूँ कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। वो ये महामना जी थे जो ऐसा संदेश देके गए। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आगे चलता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, इसलिए उनको प्रणाम। My dear friends, a well-known fact: we take birth with the pain, to mother, to family, providing pain to them, and throughout life, we face a lot of stressors, a lot of external and internal pressures, and causative factors which inculcate pain, which develop pain if you perceive, and then throughout our life, we live with the pain, we die with the pain, leaving behind the pain to the friends, family, and society. So we all are worried about the pain, but hardly we understand what the pain is. If we think and see that the whole of the universe, the man, machine, money, methods, each and everything is moving around the pain. Someone's thinking about that I will be the topmost or the supreme nation worldwide. Someone thinks about the treatment of the sufferings, those who are really in need and in the pain. So the basic thing is pain. अभी आप याद करो तो आत्रेय भद्र का प्रिय अध्याय में जब आप रसों की और आत्रेय जी के पुनर्वसु जी के संभाषा को देखे तो वहां पर भी मंथन सिर्फ इसी पे हुआ था, पेन। और सबसे पहले आयुर्वेद की चर्चा के लिए जब ऋषि भरद्वाज के पास लोग गए तो वहां पर भी पेन की ही चिंता थी कि समाज को पेन से कैसे मुक्त किया जाए। और सच देखा जाए तो कार्डियोजेनिक पेन एंड लेबर पेन, उसके बाद सबसे भयंकर पेन जो अनकंट्रोलेबल होता है, दैट इज द पेन ऑफ कैंसर ओरिजिन। So this is a very burning issue, and the whole of the universe is trying to pacify this nature of the pain, and that is why the organizers have selected a topic to discuss about the cancer pain management and what we Ayurvedic person can do and can contribute in this regard. If we discuss about the cancer burden, in 2010, it was 18.7, and by increasing in 20.9%, and the death rate of the sufferings of cancer was 26.3%. Means the incidence of cancer was 20% and death rate was 26%. Leaving behind a question to us that are we really progressing in medical science? If the sufferings are less and death rate is higher, means we are not in a line of progress. Definitely we are not doing well. The projected population of the cancer was in 26.7, and which is predicted up to 29.8 millions. And you will surprised to know in the north area, it is approximate 2,500 per lakh people, and in northeast it is comparatively less. But the findings are to be very worrisome. Among these pictures, if we find and analyze that the incidence gender-wise is the men are more sufferers with the cancer-like disease. Here it is very much clear that 61 males are there and one definitely will suffer the cancer, and that due to lung cancer. In females, 29 females, out of that one is suffering with the breast cancer. And overall, if we analyze that, we find that
from birth to 74 years of age, 1 in 9 Indians will definitely develop cancer during their lifetime. 8 lakhs, a big number, 8 lakhs new cancer cases per year are developing in our country. And breast cancer, cervical cancer, and oral cancers are the leading cancers to affect the human beings, and they are very challenging to us. Earlier, it was thought that the tobacco and alcohol are the main culprit to cause the cancer, but our lifestyle, obesity, radiation from the mobile towers, vegetables grown in toxic water near the industries, and food adulteration, along with the colorful food and vegetables, those who are artificial in nature, they also contribute as a causative factors to develop a cancer, knowingly or unknowingly. If we go through the total burden of the disease, sharing more than 40% is of cancer, and lung and breast cancer are at the higher level, 10.6 and 10.5 respectively, and then esophageal, oral, stomach, liver, and cervical cancer are 5 or go in between somewhere. This means these organs are definitely directly involved to our routine lifestyle. So we have to think about this. Data is not that much important. Important is what the message we are perceiving from this data. So I will discuss why these are important in our routine lifestyles. But we are going to discuss the cancer origin pain. Active cancer therapy is 30 to 50%. When a patient suffering from the cancer, out of 5 million cancer patients, those who are taking active therapy, but out of them, 30 to 50%, those who are taking conventional active therapy, they are suffering with more pain. And 50% patients are suffering with the cancer, they die with a painful death. And majority of the patients suffering from the cancer, they are asking for mercy killing. They are committing to suicide. This is very worryful, and assuming or observing these findings, we have to think, are really we progressing? Answer is no, not at all. When cancer pain develops in a patient, as and when a person is diagnosed as a cancer patient, he starts feeling pain, and 25% of those community, they start feeling pain as and when they are being diagnosed. Because I'm seeing those patients in my OPDs, the history of those patients, when I record, I found that earlier they were very well fine, and as and when they were told that you are having a cancer-like disease, a lot more consequences of pain develops in that very person. And when the treatment starts, the 30% of the patient, they feel a very worst type of pain. And what about the advanced stage of cancer? Means majority of the patient, either they are not being diagnosed at the early stage, or they are not able to take the active therapy at well in time, and sometimes the cost of the cancer conventional therapy and non-availability is the more causative factor of the cancer related pain. While we are going to treat a pain of a cancer, we should know that what are the causes of the cancer pain and how it is going to be presented by a cancer patient. So,
causes are the increasing order of the cancer. Sushruta has very much clearly mentioned Sanchayam Prokopam Sthana Sanchayam Vyakti Vedam Cha. It is the very clear concept regarding the disease of the cancer, like very well. We can understand very well and very simply. So, Uttaruttar Dhatu mein, when the disease invades in subsequent dhatus, ras, rakt, mans, med, asthi, majja, and then sukh. The bone metastasis is nominated as incurable cancer. So, causes of cancer pain, the progression of the disease from stage 1 to stage 2 or stage 3 itself is a causative factor of pain. And then coming to the cancer, conventional therapy, surgery, chemotherapy, radiotherapy, now immunomodulatory therapy, these are the conventional therapy and they are definitely the causative factor. Because when we observe the nature of the pain, it is not limited only up to somatic, visceral, or neuropathic. There are psychological pain too, as our vice chancellor is saying that we are thinking about the sufferings of the pain. And when we think about, we touch the heart of the patient, the mind of the patient, socio-economical status of the patient, and the background and the other economical factors that is to be taken into proper consideration. And overall, the negative or ill effect of the cancer, which affects on quality life and the mortality. We will see later on that how it affects the quality life and how it affects the mortality. So understanding the types of cancer pain, very first one is the nociceptive pain, is the somatic and bony. What is the nature? Intermittent to constant, and it feels like a sharp knife. Sometimes when it localizes, definitely you should think about that there is a soft tissue infiltration of the cancer. Because in early stage, what happens? There is inflammation, then proliferation, then infiltration, and then metastasis. So when a patient says that now some cutting pain like a sharp knife and it is localized somewhere, definitely there is a soft tissue infiltration and that is the alarm sign. But when it metastasizes in the bones, there is a constant pain, dull aching pain, localized, sometimes neuropathic, like, and sometimes you may find there is a vertebral metastasis and the fracture of the vertebrae. Especially it happens in females, ovarian and uterine cancers, and in prostate in male cancers when there are the secondaries, when they progress to the upper body part from the center of origin, then it metastasizes to the bony vertebrals. So this is the nature of the pain, what the patient feels and what we understand that is in this reference. Then neuropathic pain. There is a dysesthetic pain. There is a burning, tingling, constant and radiation. And the nature of the pain is like a post-herpetic neuralgia. If we have gone through ever the history and the presentation of the herpes, we will definitely correlate that time. This pain is just a neuropathic pain. What the patient, my patient says that साहब मुझे लगता है कि मेरे शरीर में एकदम जलन सी हो रही है और चुनचुनाता रहता है, झंझनाहट सी होती है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है. Means that is the aesthetic pain of neuralgic. Only neuropathic pain has been developed in the patient. And what the neuralgic pain is: shooting, stabbing, shocks like lancinations, and the proximity. So what happened? Trigeminal neuralgia. If any of you have gone through the observation of a patient who was suffering with the trigeminal neuralgia, you will find that neurological pain, neuralgic pain is presenting in a cancer patient
like shooting pain, stabbing pain, shock like. These are the characteristic features of those pains which a cancer patient suffers with. हर्पीज में आप जानते हैं कि इतना तेज पेशेंट को जलन और दर्द होती है तो वो कहता है कि सर कुछ से भी आराम नहीं हो रहा है। उस समय वैसा ही पेन का नेचर जब हो जाता है तब हमें सोचना है कि कैंसर पेन का ये इन्फिल्ट्रेशन है, डिस्ट्रक्शन है, नर्व वहां से डैमेज हो चुकी है। न्यूरोपैथिक पेन, chemotherapy induced pain. In my first slide there is a lady, she had a chemotherapy and look at her left hand, how terrible is. Patient was crying like anything and there was a burning shooting pain in her hand. In surgical neuropathies, many of the patients they deny surgery. Why? They have an observations and experiences of the other patient waiting outside the hospital. They share their experiences and they come to us, sir, I will not prefer the surgical intervention for my treatment because the pain, I will not be able to tolerate that surgical pain for the cancer removal and there are chances of recurrence. So what will be the benefit if the after surgery the chances of the secondaries are there, then why I would like to offer a gift of the surgical neuropathic pain. Then this very patient of phantom limb pain, last week she came to me from Bijnor side. She had a CA breast, right, and had a phantom limb presentation in her right hand. You can see how much pain she will be bearing and living with that. She is unable to lift her even fingers and the limb itself. So post-mastectomy and thoracotomy syndromes are the complications of the surgical neuropathics. So these are the consequences of the pain of a sufferer of a cancer, where we can predict that these are the real pain and there is as such no any remedy. I will come later on to the remedy and what are the problems and limitations there. But sometimes a patient suffering with the pain induced by a cancer-like disease, there is a severe transitory increase in pain. कब होता है? वो बोलता है पेशेंट कि सर मैं लेटा रहता हूँ, करवट बदलता हूँ, खांसी करता हूँ या डॉक्टर आके मेरी ड्रेसिंग करता है, बहुत तेज दर्द होता है। इतना दर्द होता है, मैं एक बार ड्रेसिंग कर रहा था पेशेंट का और पेशेंट ने मेरी एप्रन को इतनी जोर से खींचा कि मेरी पॉकेट फट गई थी। आप सोचो कितना इंटॉलरेंस होता होगा उस पेन में, कितनी इंटेंसिटी होती होगी उस पेन में जो उस पेन के साथ जीता होगा। एंड ऑफन एसोसिएटेड विद बोनी मेटास्टेसिस। अब जब बोनी मेटास्टेसिस के पेशेंट को आप देखोगे तो ये सोचोगे कि रात रात भर पेशेंट के अटेंडेंट बोलते हैं कि मेरे पेशेंट जो मेरे मम्मी पापा है, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, वो बोलते हैं रात भर मेरे हाथ पैर को दबाते रहो, मुझे आराम मिलेगा। इस तरह के नेचर के बोनी मेटाइस, और इसीलिए जब हम कहते हैं उत्तरोत्तर धातु में जब ये कोई भी व्याधि होती है जो कि दुष्चिकित्सा हो जाती है तो उसमें बोनी मेटास्टेसिस जब हो जाती है तो हमारे आचार्य भी बोलते हैं, और जब कर्कटार्बुद को आप पढ़ेंगे यू विल फाइंड दैट देयर इज ए क्लियर मेंशन दैट द बोनी मेटास्टेसिस इज अ साइड। So what are the problems? Why? This is not only because of the disease itself, because of the other factors like the psychosomatic or psychophysical factors which influence the intensity, because the disease is not going to be cured. It is progressing in spite of proper conventional therapy, but the pain is more and more in accumulation. So this is the pain of the others. So what are जीरो प्लस बन जाएगा, इनका बन जाएगा। जैसे आप लोग मार्च 20 में थे तो सर सितंबर को हम लोग का 0 गया था और मार्च में हम लोग का फर्स्ट गया था। फर्स्ट सैलेन जी अपनी तरफ से इनको म्यूट कर लें आप।
So what are the limitations? We are thinking and we are worried about to treat the pain. In allopathic counterparts, though they are doing their best efforts to pacify the pain and using from the beginning, means from first day they are using NSAIDs, steroids, COX-2 inhibitors, bisphosphonates, but mind it, my dear, never use NSAIDs with the steroids. Then if the pain is not being subsided, then they are using opiates. Coming to the opiates, first thing is availability. It is not available in our market. After proper permission from the Drug and Narcotic Department, centers, they procure the drug either in the form of tabs or in form of injections. They register their patients, and patients, those who are suffering with the severe pain, majority of the times they can't get that facility of pain remedying. Then we all know there are common and uncommon side effects of the opiates, and after taking a prolonged duration, opiate-induced neurotoxicity is unbearable pain. In our text last month, when I was discussing this on the IFAN Divas, my question was to the authorities and policymakers that आईफेन के सारे योग आयुर्वेद में बंद कर दिए गए, कोई भी कंपनी आईफेन के प्रयोग को नहीं बनाती, योग को नहीं बनाती, बट फार्मा डिवीजन एलोपैथिक का वो हमारी आईफेन को शोधित करके उसके अल्कलाइड को निकाल करके उसके विभिन्न प्रयोग बनाती है और हमारे देश को वापस भेजती है और बहुत सारा हमारा राष्ट्रीय मुद्रा भंडारण वो कर ले जाते हैं। भाई हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे आचार्यों ने तो लिखा हुआ है कि आईफेन का प्रयोग करिए, आईफेन के ये गुण है, ये दोष है और इसका शोधन ऐसे होता है। सब जब आईफेन के जो रा आईफेन है, कच्चा आईफेन है, उसको शोधन करें हम, और जो शास्त्रीय योगों में प्रयोग की मात्रा बताई है, अगर उतनी मात्रा में हम आयुर्वेद चिकित्सकों को ये अधिकार दे दिया जाए, भले ही CCIRS से अथॉरिटीज ऑफ हमारे NCISM इसको रिसर्च करे और उसके बाद अगर उसका प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि ना तो उतने साइड इफेक्ट होंगे, ना हमारा देश का मुद्रा विदेशों में फार्मास्यूटिक्स डिवीजन को जाएगा और हमारे रोगियों को आसानी से मिलना शुरू भी हो जाएगी। One of my patients from Bihar, from the remote area, one day came to my OPD and said, "Sir, सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए। अभी अभी 1 मिनट पहले म्यूट हुए सर। हेलो, हाँ अभी, अच्छा हाँ अभी हो गया था। एक हेलो, am I audible? Yes sir, you audible. सर आपकी तरफ से म्यूट हो जा रहा है। नहीं नहीं अभी, जी जी, ओके, इट्स ओके। सो दैट कि 2 दिन से लाइन लगाने के बाद शाम को मेरा नंबर दूसरे दिन 5 बजे आया है और मुझे 5 टैबलेट मिली है, बोले खत्म हो गया है आज का स्टॉक, आप अगली बार आइएगा। बिना पेशेंट को देखे मॉर्फिन डेरिवेटिव्स नहीं दी जाती है, पेशेंट मर जाता है तो अटेंडेंस को वापस करना पड़ता है गिन के, और वो ड्रग एंड नार्कोटिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो दीज आर द सर्टेन लीगल इश्यूज, एंड इफ गवर्नमेंट allow us to purify this morphine, iphane, morphine is the alkaloid, iphane, and as per the text of Ayurveda is mentioned in the
text of Rasastra, Charak, Sushrut, Vagbhat, and allied more subjects. Then the problem may be solved with the least side effects. So what happened? Now these days, allopathic practitioners, they have made a line of treatment to pacify the pain, that is radiotherapy. We the anesthetists perform the different nerve blocks, use sedatives sometimes, acupuncture, cognition and behavioral treatment, yoga, meditation, magnetotherapy, and ultimately they have mentioned herbal drugs. So my dear friends, they have started to recognize the real meaning of the treatment and how Ayurveda can contribute with the application of the compounds, treatment remedies, and the other mentioned in the text of Ayurveda, because Jwar is a symptom and pain is the foremost factor. In my opinion, मैं डिजीज की जो डेफिनेशन देता हूँ वो ऐसे है कि अगर कोई भी शारीरिक और मानसिक आघात किसी व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसके समाज को, उसके राष्ट्र को, अपितु पूरे विश्व के प्रगति का बाधक होगा, वो फैक्टर डिजीज कहलाएगा। और उसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले चिंतन किया गया और अल्टीमेटली सब लोगों ने अपनी स्वीकार्यता दे दी है कि हर्बल ड्रग्स जो अब हम सोचना शुरू किए हैं, क्यों ना उस पे सारे मिलके काम करें। डेफिनेटली वी विल फाइंड द आंसर विद द लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस। What happens in a suffering when the living becomes a bit taboo? Patient is suffering with the physical problems. There are psychosocial problems. Emotional problems, no doubt, always stands with them. And ultimately, patient starts losing spirituality, he loses the spirituality. These are the causative factors. And leaving behind a big challenge, as there is no response of the treatment. And socio-economical unrest is always with them. And the poor quality life. Patient starts losing faith in God and religion. All these affect each other. If the treatment is not responding, means socio-economical unrest is there. Economical condition is poor, he will not be able to afford the expenditure of the treatment, ultimately impacting over the quality life. And when all these are there, there is a big challenge, and patient starts thinking that there is no any God and only the pain is the God. Patient starts saying that, my dear God, pain, please give me some discount. हमारी आदत है ना हर जगह डिस्काउंट मांगने की, सर थोड़ा डिस्काउंट करो ना। वो अगली दुकान 5% करती है, आप 7 करोगे तो मैं आपके यहाँ रोज आऊंगा। मेरा पेशेंट पेन से कहता है कि भाई डियर पेन, आप तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट करो, क्योंकि मैं तो अब रोज का कस्टमर हूँ ना आपका। कभी बोनी पेन होगा, कभी सोमेटिक होगा, कभी न्यूरैल्जिक होगा, कभी सोशल होगा, कभी इकोनॉमिकल होगा, मैं तो पेन की गठरी बन गया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट किया करो। दिस इज द वर्डिंग ऑफ माय पेन पेशेंट्स। What happens? Why there is a pain and what type of the pains they develop? First of all, if any disease is inside the body, that will lead to the decrease in metabolic functions. And when that is decreased, means immunity will automatically decrease, and the symptomatic disorders, अगर immunity कम हुई है तो हमें पहले ब्लड बॉर्न डिजीजेज होंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेज होंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे दूसरे सिस्टम की डिजीज होंगी। मेटाबॉलिक फंक्शन कम है, इम्यूनिटी भी कम हो गई, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। पहले खांसी अकेले आती थी, अब खाना भी नहीं हजम हो रहा है। पहले 4 कदम चल लेता था, अब उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ग्रेजुअली deteriorating with all these causative factors. But the big question is,
understanding pain, how you are going to understand? We often understand pain of our own. So we say that, oh my God, I am alive. Because I can feel, I can realize my pain. But my dear friends, when you start feeling pain of others, means really you are a human. And for what we are, and we have opted this medical education, especially in Ayurveda, because we are living in a society and everywhere allopathic doctors are advanced, now hospitals are not available. We are bound to live with the stress of the facilities, and that stress always provoke us that you should think, you have to prepare some formulation from the herbal origin, kitchen origin, then you can build a good society and you can contribute for the upliftment of the nation. What happens? Psychophysical depression starts, chronicity of the disease, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ जा रहा है, तो chronicity of the disease starts. We take the conventional therapy and are taking the gift of ill effects of those treatments. Then there is psychophysical, socio-economical unrest. Ultimately, what happens? The multi-system organ failure is there and patient dies with the pain, and that death is very painful, and that's why our patients, they ask for mercy killing. I started my journey in 1994 when the first ever any palliative conference was organized in our country at the BHU. And the picture in center is the founder, president of American Society of the Palliative Care, Robert Tricos. I had presented my paper there and he was very much impressed, then asked me that, Dr. Pandey, can you contribute in this regard? What the Ayurveda says? Since then, I started my journey working in the field of pain and palliative care. And in real sense, I started from 2005 with the collaboration of the Department of Radiotherapy and Radiation Medicine and Oncology from the Institute of Medical Sciences. And this was the very beginning when I started. What I find in my patient that a terminally cancer patient, terminally ill means a patient who is really at the verge of the death, of a painful death. We can find the many of the symptoms, they are with the GI systems. Majority of them are the hepatobiliary, and then cardio, respiratory, and then endocrinological, and then neurobehavioral, and no any visual injury appears except there is a discomfort. एक बार मेरा पेशेंट बोला मेरे से, पैलेटिव ट्रीटमेंट ले रहा था, बोले सर बहुत अच्छा है, पहले तो मैं एक रोटी खाता था, आपके ट्रीटमेंट से 4 रोटी खाने लगा, लेकिन अब 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मैं 2 रोटी बड़ी मुश्किल से घोट पाता हूँ, और कल शाम को जब खा रहा था तो मेरे छींक आ गई और उसी वक्त मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में खुजली होने लगी, मैं उसको खुजलाने लगा, मेरे पीठ में एक सुई जैसा चुभ होने लगा. Can you imagine what the pain is and where the pain is? दिखता है क्या कि एक आदमी जो 4 रोटी खा रहा शुरू कर दिया था वो 3 रोटी पे आ गया, उसको जो है कफ होने लगा है, अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो क्या एक पेन है क्या नींद नहीं आना? We have to think each and every aspect of the patient, of his behavior, his psychophysical unrest. What happens? हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनका जो बताता है वो वही देखता है. जो ऑब्जर्वेशन है मुझे मिला पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन से, हम उतना ही जान पाते हैं. But the majority of the things which are still inside the patient's mind and body, we are unable to understand, like an iceberg floating on the water. एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमको दिखता है पेशेंट जो हमको बताता है ऑब्जर्वेशन से, इंस्पेक्शन से, और उसके क्वेरीज से, इंटरोगेशन से, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से, बस इतना जान पाते हैं. बट आई कांट सी व्हाट यू वांट टू सी. सो आपको वो चीज जब तक आप नहीं जानते हो कि ये भी हो सकता है, तब तक आप उसको बिल्कुल नहीं सोच सकते हो. करना और लिखना समझना तो दूर की बात है.
सो वी हैव टू एक्सप्लोर। इसीलिए चरक जी ने कहा और मालवीय जी ने भी कहा कि मुझे वो रास्ता बताओ अंदर तक जाने का, जहाँ पे जाके हम उस वेदना को पढ़ सके। और चरक ने कहा है कि रोगी के शरीर में जो चिकित्सक घुस गए, उसके मन की पीड़ा को नहीं समझता, वो चिकित्सक बन ही नहीं सकता है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स दैट वेरी मैसेज। सी हियर, apparently my patient this, she was not having any pain, इसको पल्पेट किया, कोई पेन नहीं था, लाइपोमेटस था। लेकिन अब आप देखो इसको पेन क्या हो सकता है, कहाँ पे है साइट, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको लेके ये सोच रही है पेशेंट। इसका नेचर क्या होगा, ये राइट पोस्चर में नहीं सो पाती है, बैठ नहीं पाती है, देख नहीं पाती है, तो इसके कौन कौन से पेन होंगे। और इसमें हमें क्या कहीं पेन दिख रहा है, तो वो एक ही पेन दिख रहा है कि इसका जो है कंटूर बिगड़ गया है, इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, इसका ब्यूटी खराब हो गया है। बट इसके बाद इसका पेन कहाँ कहाँ गया हुआ है, हमें वो देखना। आई पे प्रेशर डाल रहा है तो न्यूरोलॉजिकल प्रेशर होगा, इसके मूवमेंट में प्रेशर डाल रहा है, इसके साइकोलॉजिकल पे प्रेशर डाल रहा है, रिलेशन में कहीं जाता है तो उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोशल आइसोलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। These are certain factors which are really to be understood. Then we have a lot more challenges. There are many more remedies for the pain treatment. Many threshold factors of a patient is there. Many more drugs are there, but they are definitely having their certain limitations. And there are many more alternatives, but none of them are devoid of their unwanted or untoward ill effects. सो दिस इज अगेन अ चैलेंज। अगर ये होता कि ये दर्द, पेट का दर्द ऐसा होता है, उसकी एक ही दवा बनती, दूसरी कंपनियां डेवलप ही नहीं करती, एक कंपनी की मोनोपोली होती। बट दीज आर द लिमिटेशंस, दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स व्हिच restrict us to use a single drug or single modalities of patient treatment. Now, how we can contribute and what are the perspectives of Ayurveda in palliative care? In Charak Samhita, it has been mentioned, says dosatvad ayusho yapyam asadhyam patra sevaya labdhalpa sukham alpena hetunashu pravartakam। कितने हजार साल पहले ये चीज लिखी गई थी, आज मॉडर्न मेडिसिन इसको दिल खोल के एक्सेप्ट करके एक नई ब्रांच बना दिया पैलिएटिव केयर की। वो चिकित्सक जो यायावर थे, संभाषाएं जाके अरण्य में करते थे, उनके पास कितना विजन था, और हम पढ़ के उसको टेक्स्ट में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अरे तो रोग के भेद बताए, साध्य असाध्य के भेद बताए, बस इसको पढ़ लो बेटा, इतना ही काफी है। हमने भी यही पढ़ा है। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टू टीच माय स्टूडेंट्स, बिकॉज टीचिंग, टचिंग एंड ट्रांसमिटिंग अकाउंट्स मोर इन अ सिस्टम ऑफ एन एजुकेशन। आप अच्छा टीच करिए, लेकिन टीच कब कर पाएंगे, जब तक आप पेशेंट को, स्टूडेंट को उनके दिल में, दिमाग में टचिंग नहीं करते हैं। उनको ये बात बताइए और उसके बाद ट्रांसमिट करना। आपने जो बोला वो बच्चे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपका ट्रांसलेशन उसके माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स पे जाके इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, और वो उसको कैसे अप्लाई करने जा रहा है, ये फीडबैक लेना है। सो ये बातें जो हमारे आचार्य ने बताई पैलिएटिव केयर में, बहुत ही समीचीन है। बट unique way to describe and understanding of a disease is totally based on those स्रोतस अग्नि, मल, बल एंड ओजस। अभी परसों में एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल थी, उसमें जुड़ा था, कैम्ब्रिज से डॉक्टर नवीन जुड़े हुए थे, उन्होंने आयुर्वेद के टीचर है, उन्होंने वहां बताया, आई एम गोइंग टू शेयर दिस वन बिकॉज यू माइट थिंक बेटर देन मी। उन्होंने कहा कि हम वहां पढ़ाते हैं कि आकाशवाद वायु, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापा, क्षितिस्तथा। और सबसे पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, फिर अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। अग्नि बीच में क्यों आई? आकाश और वायु पहले, बीच में अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। सो ये सोचने का विषय है। ऐसे ही हमारे यहाँ जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो बोलते हैं कि रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान्यास्तो परीक्षयेत नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दिगाकृति। सबसे बड़े नाली क्यों आती है?
नाड़ी को बाद में कर सकते, कोई तुकबंदी करके कविता तो बनाई नहीं जा रही थी, लेकिन आचार्यों का इन शब्दों को रखने के क्रम के बारे में बहुत बड़ी वैज्ञानिकता थी। हमें उसको समझना होगा, और कैंसर पेन के लिए या किसी पेन को समझने के लिए हमें दोषों को अच्छी तरह समझना होगा, दूष्यों को समझना होगा, स्रोतस को समझना होगा, और सबसे प्रधान अग्नि जो धात्वाग्नि है, जठराग्नि है, भूताग्नि है, सेल की अपनी अग्नि धात्वाग्नि होगी, उस अग्नि को, उस मेटाबॉलिज्म को समझना होगा, उनके मेटाबोलाइट्स मल के रूप में है उनको समझना होगा, और उनके जो कैलोरी वैल्यू निकलती है जिसको हम बल कहेंगे, और अल्टीमेटली जो उसका ओजस होता है, जो उसका रिजल्टेंट होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको हमें सोचना होगा और आयुर्वेद के सिद्धांत पे पढ़ना होगा, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना होगा। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड एनी डिजीज और द पेन इंड्यूस्ड बाय अ डिजीज, स्पेशली इन रेफरेंस टू कैंसर। अग्नि की बात आती है तो अल्टीमेट इफेक्ट्स आने लिवर, चाहे वो डिजीज हो और चाहे वो उसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हो, दोनों में सबसे पहली बात होती है कि देयर इज अ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, और जब डिजीज की प्रोग्रेशन होती है तब हम कैंसर कन्वेंशनल थेरेपी लेते हैं। वो कहाँ जाती है? लीवर में मेटाबोलाइज होती है, और जब वो लीवर में मेटाबोलाइज होती है तो कैंसर का पेशेंट पुअर हेल्थ है, सारे उसके मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेल्योर की तरफ जा रहे हैं। तो कैन यू प्रेडिक्ट दैट द conventional chemoradiotherapy or any other drug which will not going to damage the cells of liver or the dhatus of the Rakta Nirman or Pachan Sansthan Kendra? If it is not there, definitely that will lead to stress, because the disease is in progress. Treatment ill effects are side by. Health is going to be deteriorated. Definitely the patient starts thinking about, and that is the cause of the stress, and then there is a socio-economic unrest. The disease is there, liver is not functioning properly, Agni component of that particular patient is decreased, metabolism is decreased, detoxification of the drug is not in proper manner. What happens is liver, there is a synthesis, there is a purification or detoxification, and the metabolism. When there is a problem in the drug detoxification, means the toxic drug, chemotherapies, radiations are toxic in nature. So that toxic drug is not going to be metabolized properly. Our food is not digested properly, and the detoxification of that drug is not there properly. Means accumulation of those waste products, harmful products are there, that definitely decrease the immune system of our body. Then think about the quality of life of the patient. So application of the fundamental principles stand very strongly here to understand the proper subject. This says my patient was brought to me on stretcher and very hopeless. Now says fine there, having a tumor on her back. So Rasaposhan, Prasadan, Shukra Poshan, Ojo Vardhan, Agni Deepan, and Dhatwagni Vardhan, all these are responsible to enhance an immunity. Immunity is nothing. ऐसा ही समझो कि बॉर्डर पे हमारे दुश्मनों के कंपैरिजन में हमारा सिपाही ज्यादा ताकतवर है, उसके पास बहुत ज्यादा हमारे वेपन्स हैं, तो दुश्मन इधर नहीं आ सकते। तो वही चीज हमारे इम्यून सिस्टम की है, और इस डिजीज में हमें इम्यूनो मॉड्यूलेशन करना है। बट मॉडर्न मेडिसिन में क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में क्या करते हैं, अभी उन्होंने इम्यूनो मॉड्यूलेटरी सोचना शुरू किया। कैन यू इमेजिन व्हाट द कॉस्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी? Single sitting cost is more than 3 lakhs and having a lot more complications. My one more patient, he was advised to visit TMH, Bombay, and on first visit, he was earlier, he had taken surgery along with the chemo and radiation, ultimately came to me and was treated, was cured, but due to lockdown, he was unable to visit me, and the disease again relapsed. For that, he contacted me on phone, and I suggested that you again go to the TMH, and there his immunotherapy was started,
and on very first immunotherapy, with the half of the dose, he fainted and went into shock and hardly could revive. So can you imagine what happens with the immunotherapy and what the psychotrauma to the attending family members, those who are not sick but worse than the patient? Then how you are going to approach a patient and family? First, to cure, try to cure, restore the functions of his our life, if possible prolong the life, but always think about the comfort to the patient and the family. What should be the key to get success in your planning? Good listening. मेरे पेशेंट आते हैं, आधे आधे घंटे मुझे अपनी कहानियां सुनाते हैं, मैं चुप आंख बंद करके सुनता रहता हूँ, बोलता हूँ कि आप अपना जितनी भी प्रॉब्लम है कागज में लिखो, टाइप करना मुश्किल है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं रात में पढ़ूंगा, सवेरे तुमसे बात करूंगा, टाइम मिलेगा तो नहीं मैसेज डालूंगा. So you must be a good listener. This is not in reference only to the cancer patient, but for all my patients. Then try to explain in a better way. And then best setting of the positive rehabilitation. हम बोलते हैं कि हमने तो बीमारी को ठीक कर दिया, ठीक है, उसको बुखार था, आपने बुखार को ठीक कर दिया. बाढ़ आया, बाढ़ के लिए पानी का निकासी का इंतजाम कर दिया. Can you imagine the picture which was left behind the flood? Can you restore that one? जैसे वो पहले था, वो टीला वहां पे था, वो पत्थर का टुकड़ा वहां था, वो सीढ़ियां वहां साफ सुथरी थी, उसके बगल में एक छोटी सी मूर्ति रखी थी. Can you restore that one? The very same thing happens with our body. When it is sick, definitely the culprit will go out by the treatment, but leaving behind some sort of the garbage, and that requires the rehabilitation. इसीलिए सुश्रुत ने बहुत अच्छा लिखा है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म. पश्चात कर्म में सिर्फ इतना नहीं है to manage the complications of the surgical anesthetics, but also try to restore, try to rehabilitate the tissue structure, the organ construction, and the restoration of the psychophysical buildup of a person, those who were sick and under your treatment. So rehabilitation is the foremost important when we are going to treat a patient. Then, what is the treatment module? I had tried to make a triangle, Vat, Pitta, Kapha, Agni, Som, Vayu, Hetulung, Aushad, like that. There are three-dimensional module of the treatment, that is Sattva Bhajan, Daiva Vipasya, Yukti Vipasya, then spiritual therapy, drug, diet and lifestyle therapy, and then psychotherapy. These can be helpful while treating a pain of the patient. Why spiritual therapy is required? Patient आया बोला, सर मेरे पड़ोस में तो बहुत गंदा काम करता है, रोज मुर्गा मुर्गी काटता है, जीव हत्या करता है, गाली बकता है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं सुबह से कुत्तों को रोटी भी खिलाता हूँ, गाय को भी रोटी देता हूँ, किसी को गंदा भी नहीं बोलता, बट ये कैंसर जैसी बीमारी मुझे हो गई, मेरा घर बिक गया, मेरे बच्चे अनाथ होने के कगार पे है, माली हालत जीरो है, अब बच्चों के पेट में रोटी डालूं या अपना इलाज कराऊं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता. He start thinking like this, and then there is a psychophysical depression, and this psychophysical, because mind and body both are correlated, are interlinked with each other. So deviation from the religious and the God, faith from the God, this is only because of the psychophysical depression, and that leads to aggravate the disease like cancer and intensify the cancer pain. So this type of approach can be beneficial to the patients and to the attendants. That definitely something is there. I used to say Ayurveda is not just like a science of life. It is science of, so it is social science, it is the philosophy, it is the culture, and overall it is a faith. To develop the faith is a type of counseling and psychology. I have quoted here Vedas. Vedas is not just the holy text of the Hindus. Any text which is the holy book of any religious, I say them as the Vedas. So there is a mention about the philosophy of life and death. Try to inculcate the spirit of the God,
motivate them to religious act and care of the family members even after the death. This is the definition of the palliative care. किसी की डेथ होती है तो हम रिचुअल्स के लिए बोलते हैं, करते हैं। एक किसी के घर का कोई बुजुर्ग छत्र छाया देने वाला, एक कमाऊ पूत जो कमा के पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, परिवार के बुजुर्गों की लाठी हुआ करता है, एक बच्चा जो नौनिहाल है बट उसको ब्लड कैंसर। इन सब के जाने के बाद जब रिचुअल्स होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, तो कितना दुख होता है। बट जब हम गेट टुगेदर होते हैं तो और इतने सारे कर्मकांड होते हैं, उस बीच में धीरे धीरे दुखों को भूलते हैं। और फैमिली और पेशेंट्स को मेरा हम्बल सबमिशन यहाँ पे है, अगर हम ऐसे रिचुअल्स में कभी जाते हैं तो हमें उस परिवार के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और ये व्रत लेना चाहिए कि अगर किसी के यहाँ ऐसा होता है तो हम अपनी सामर्थ्य से जो उसकी मदद कर सके करना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी लाइफ टूट चुकी है। हमें उसको रिहेबिलिटेट करने में कितनी हेल्प कर सकते हैं। देन वेदोपदेश में नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन बताया है, पीस ऑफ माइंड, इनहांस द मेंटल हीलिंग, मेडिटेशन। आज मॉडर्न मेडिसिन भी मानने लगा है। मेरे अंडर में योगा थेरेपी के बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। आई हैव गिवन देम रिसर्च टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ योगा थेरेपी टू मिनिमाइज द साइकोफिजिकल alteration induced stress and impact over the quality life of a patient, and we are getting good results. Then application, yukti vipasa chikitsa, application of herbal drugs. You will find many more drugs are being mentioned in the text of Ayurveda here and there, and especially in Charak Samhita Panchasat Mahadhyaya. You will find a lot more drugs have been mentioned for the symptomatic disorder or the systemic disorders. So use of specific medicine. Can you find any potent analgesic of herbal origin? I used to ask. Many times people may ask me that, Dr. Pandey, please tell me, is there any anesthetic drug? Is there any potent painkiller? I used to say, my dear friend, this is the topic of we all Ayurvedic fraternity. We have to think collectively. The day we will find any potent, safe analgesic, each and every Ayurvedic person will get a Nobel Prize from the society, from our Indian origin. So symptomatic relief, if we can provide, that is sufficient. Improvement in quality of metabolic activity and good dietary, because देहो ही आहार संभव है। अगर हम अच्छी डाइटरी रिजीम बनाते हैं और जो उसको, जैसे मेरे पेशेंट कुछ नहीं खा पाते, मैं उनको सूप बनाता हूँ, कई एक रेमेडीज लेके उनको सूप देता हूँ, उनको सत्तू देता हूँ, उनको बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस बना के एडवाइस करता हूँ जो कि चरक में, रेवागु में और इसमें संसर्जन क्रम में लिखे हैं। दे गेट बेनिफिटेड, थोड़ी सी एनर्जी जाती है, थोड़ा सा उनका मूड एलिवेशन होता है और थोड़ा सा वो सेल्फ स्टीम्ड हो जाते हैं। देन मेटाबॉलिज्म क्या करता है? इनहांसेस द बल फिजिकल एंड मेंटल, आरोग्य इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ, आयुष क्वालिटी लाइफ को ही मैं आयुष बोलता हूँ, और प्राण लॉन्जिविटी एंड प्रॉपर फंक्शन मींस मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी फंक्शंस, दैट इज द प्राण। सारंगधर संहिता में बहुत अच्छा बताया प्राण और प्राणवायु के बारे में। देन हर्बल एंड एंग्जाइटीज, नींद नहीं आती पेशेंट को, हम उसको ऐसी चीजें दे देते हैं कि भाई तुम कुछ नहीं, ब्राह्मी का आसो वरिष्ठ ले लो या कच्ची ब्राह्मी मिल जाए, एक चम्मच रस निकाल के पी लो। शंख पुष्पी हो रही है, अश्वगंधा हो रहे हैं, जटामांसी है, इनको खेतों से लाओ, बनाओ और उसको पिला दो। मैंने इसको जाके देखा है, EEG, EMG, बायोस्पेक्ट्रल इंडेक्स, केटेकोलामाइन, ब्लड शुगर एंड कॉर्टिसोल लेवल पर मैंने एक्सपेरिमेंटली एल्मिनोरेट, स्विस माइस, रैबिट्स, उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स में, फिर एनेस्थीसिया में मैंने देखा दे हैव अ गुड इम्पैक्ट over the psychophysical behavior. So my newer concept is management of pain and insomnia, because आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार के लिए मेटाबॉलिज्म में आपको सोचना है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी औषधियाँ लगा देनी है जो एनाल्जेसिक का भी काम करे, साथ में उसको नींद, अनरेस्ट को नींद बोलेंगे, नींद नहीं आ रहा है, उसको हर्बल एनाल्जेसिक और मेड ड्रग का कॉम्बिनेशन दीजिए, भले उसकी कैंसर की कोई भी थेरेपी चल रही है। इवन दो आई हैव सर्व्ड मेनी मोर लिटरेचर्स रिगार्डिंग द ड्रग्स व्हिच कैन इंटरैक्ट विद द एलोपैथिक chemotherapy drugs. This is all
This is all wrong. Because हम दाल चावल खाते हैं और कीमोथेरेपी लेते हैं, वो तो नहीं मना करते। एनेस्थीसिया वाले बोलते हैं कि चाइना लिटरेचर बोलता है कि एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो जिंजर के साथ रिएक्ट करती है। आप बताओ हमारे यहाँ कितने लोग अदरक की चाय पीते हैं और दूसरे दिन बेहोशी भी लेते हैं? किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं ना। So these are the propaganda and monopoly. So I don't bother because I do my practice. I care my patients with the herbal analgesics and the major drugs mentioned in the text of Ayurveda, and data documentation is there that my patients are getting benefited. So Medhya and Vednahar, anti-stress, adaptogenic, it is safe at any age, minimizes analgesic dose requirement. मेरी एक पेशेंट है, उसका राइट ब्रेस्ट एमआरएम हुआ है, उसको 30 mg TDS मॉर्फिन दी जा रही थी। हमारी नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर, और उसको बोल दिया गया था कि सिस्टर आप लेते रहो, आज नहीं तो ज्यादा 2-4 साल चलोगे। नाउ यू विल सरप्राइज दैट within a year she forget about this morphine and now quite well even after the 12 years of her surgery and having no any lymphadenopathy. So provides sedation and tranquility, provides analgesia and better outcome, and facilitate smooth recovery, and that is the good rehabilitation regarding the pain. Use of rasayanas, I will not go detail because the time is moving fast, but this is a promotive therapy to enhance the immune system, and you all know that how it is beneficial to any person. मॉडर्न वाले हमको आयुर्वेद का एलोपैथिक का दवाई लिखने से रोकते हैं, जबकि हम पढ़ के पास होते हैं, बट वो हमारा च्यवनप्राश लिपिथी भी लिखते हैं। उन्होंने पढ़ा क्या? उनको पता नहीं कि ये ड्रग कैसे प्रोमोटिव होती है, इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है, किसको हम च्यवनप्राश लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे, किसको कहेंगे दूध के साथ लेना है, किसको हनी के साथ लेना है, किसको भोजन के पहले लेना है, किसको सुबह लेना है, किसको शाम को लेना है, ये पता नहीं। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ मार्केट में दवा मिलने से नहीं होता है, हमें जानना चाहिए एप्लीकेशन उनका। Other adjuvants, this is mentioned in the text of Charak Samhita, Panchasat Mahakashaya. You can formulate many more combinations as per the need of the patient, and you need not to go here and there to find that which one is anti-emetic, which one can prevent the gastric ulcer or gastritis, or which can be act as a purgative or as a sedative. You can find, and that has a good result. Then coming to the last is the Sattva in psychological therapy, developing quality of mind and freedom from the disease. Application of yoga and meditation is the newer branch. And interesting game, होता क्या है कि हम आइसोलेटेड फैमिली में हैं, बेटा बहू जॉब पे निकल गए, पिताजी को कैंसर है, एक कोना में पड़े हैं, प्रोस्टेट कैंसर है, यूरो बैग भी लगा है या कोलोस्टमी हुई है, एक बैग में एक्सटर्नल पाउच भी लगा हुआ है फीकल मैटर करेक्ट करने के लिए, वो सोशल बिल्कुल बाइकाट हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर उसको इंडोर गेम दे दिया जाए, म्यूजिक भजन टीवी पे लगा दिया जाए, उसके साथ शाम को बैठ के वीडियो गेम खेला जाए, म्यूजिक सुना जाए, कुछ बुक की लाइब्रेरी बना दिया जाए, और जो हॉस्पिस टीम है या जो फ्रेंड सर्किल है कभी जाके दादाजी के पास बैठ के बात करें। और सबसे पहली चीज है कि लव एंड अफेक्शन, इफ वी प्रोवाइड द लव एंड अफेक्शन ओवरऑल है सिम्बायोटिक ह्यूमन टच, देन the Sattva treatment is very much helpful in this regard. Some font problem, this is mentioned there, Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. This is the श्लोका। हम पार्टी पिकनिक में जाते हैं, थोड़ा सा अपने को खुशबू मारते हैं, भगवान के पूजा घर में जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो दूसरी स्मेल लेते हैं। जब मैं 81 में जयपुर पहली बार गया तो सुना कि राज मंदिर में हर आधे घंटे पर उसकी खुशबू बदलती है। Why? Just to elevate the mood of the person. And not only this one, it is rejuvenative, beneficial to health, elevates mood, cheerfulness, strength, improves the vital functions and what not. In France, you will find that their executive class output is being achieved more in number and percentage because the alteration of the fragrance inside their chambers early. So this is the work efficacy and mood elevation, and the strengthen to the body and mind is dependent, and our aroma can do a lot. I'm using that one. So our focus area must be to the pain management, symptomatic relief,
as per the text of Charak in Panchashat Mahakasai. It is spiritual support if you can provide, and care of the family even after death of the patient, and try to provide the social mixing of the patient, not only this one. So immunomodulation, analgesic, nootropic agents are the newer dimension where you can contribute to pacify the pain of the patient. When I started this therapy, and there was a health camp, and the then Vice Chancellor, Honorable Girish Tripathi ji, and he especially visited my counter that how you are going to perform this cancer Upsami OPD. So our approach must be positive. Non-pharmacologicals are there, acupuncture, acupressure, reflexology, and Tai Chi. Then many more therapies, but aroma is also there, having a good space in that treatment remedy. So tumor is a disease or a symptom. Ayurveda is more concerned with the tendency to develop a disease, and we treat that tendency forming a disease. So integration of the Ayurveda in cancer care is a new dimension here. So allopathic and Ayurvedic science must interact with there, because we want to years to life and life to years. The effective fusion of both can good. I'm not violating their presence, or I'm not going in favor to neglect their participation. I do to honor, to welcome them for the qualitative and quantitative improvement of my patients. So collaboration of both can contribute a lot here, because there is an offensive and defensive strategy. And if allopathic medicine is sword, then Ayurveda is a shield. So hence Ayurveda and allopathic medical world works in hand many problems to care my patients and to make their survival with the technique of offensive and defensive strategy. So what should our approach? First, we have to prevent, but unfortunately, early screening of the patient is the facilities of that is not available in Ayurvedic dispensaries and even our hospital. We have to seek the help of modern medical persons. Then supportive and adjuvant therapy, I had discussed earlier. Then management of the complication. This is the very important here, because if the patient is taking treatment, definitely he will suffer with the complication, known complication, ill effects of those treatments. And if it's not taking the treatment, definitely the consequences of the progression of the disease will lead many more complications. So we have to think about, we must know the complications at any stage of the tumor development, any stage or any type of the conventional therapy. And if overall it is not, then what the sign and symptoms of the, and what are the complications led by overall psychophysical, spiritual, and social, economical, and the disease itself, what they may be. We have to think, we have to learn, and accordingly we can treat those patient pain as per the dimensions of the Ayurveda. My dear friend, drug only is not enough. Spiritual, physical health are important, and that can be achieved only with the palliative care. These are my patients where I used to go there in different sanstans. And in lower right, onco surgeon is behind me on left hand, and she is working in Homi Baba Tata Cancer Institute. And we visited both there and provided the hospice therapy. These are some of my patients, those who are attending my OPDs. You can see the prevalence of the cancer and what the strategy. In third row, right last, you can see the tongue is there, and simply biopsy was taken, and the patient was suspicious to the CA tongue or to the base. And as and when the biopsy are taken, and within a week, he developed like tongue-like protuberance or the growth of the cancer. How notorious that is squamous cell carcinoma is. These are certain patients, those who are having this cancer chemo, radiation, and then the treatment response. The patient was from the Nepal, squamous cell carcinoma, and now you can see how he was benefited with that Ayurvedic treatment. He had not taken any modern conventional therapy. Look here, the patient suffering a spine tumor and was declared hopeless, and she came to me, and now she comes on her own feet without any support of the calipers.
You can see the squamous cell carcinoma of the buccal mucosa and how he was benefited apart from the cancer conventional therapy. MRM, after chemo and radiations, he had developed blisters, and ultimately with the Agni Karma and some sort of the gold mohar leaf extract and ST Madhu dusting, this was the result. Renal cell carcinoma, you can see the pre and post treatment of the palliation along with the cancer conventional therapy from Madhya Pradesh. And you can see the what are the other cancers, CA breast, more common in our country. The patient you can see was unable after commando operation, having a problem with the CA chick and unable to open mouth. And after 30 days, you can see he can take feed with the spoon and the fingers. And one at lower, you can find the case of the melanoma of skull and was operated and ultimately healed. And now look the picture of the patient. See, the patient of CA esophagus was bedridden and was not able to take any medicine or the diet, hospitalized for a longer duration, more than 3 years from Lucknow. And now look here how she is there, and she is surviving even after the 6 years of my treatment. So संवेदना and sympathy, जब तक आपके पास संवेदना वेदना नहीं पढ़ सकते हैं, जब आपके पास सिंपैथी नहीं है, आपकी कोई भी पैथी है वो बेकार है. आपको कैसा होगा? What's the problem with us? Like a hut which was distorted in a rainstorm, and now you can see that what is the current picture of this one. And the same happens with our patient suffering from the cancer, like a pain, and you can feel the pain of that girl and how she is feeling pain. What are the pains with that lady? And the very same thing happens. But my dear friends, when a collective approach with the support, we can rebuild, rehabilitate with the collaboration of, and then you can get or you can achieve your goal like this one, and that more beautiful than it was earlier. So no Maitri Karunyam Marte Su Sakya Preeti Rupekshadai. This is the version. And then if you don't have any Samvedana, you will not be able to understand Vedana. And if you don't have any sympathy, then you don't right to have a person of any empathy. So what a value in life is quality rather than the quantity. So try to maintain the quality of life. If a patient is suffering with the cancer-like disease in a severe pain, he will never be able to have a quality life. But you have to provide quality life with the modalities of Ayurveda, that is the Daiva Prapasray, Yukti Prapasray, and the Sattva Vajay. Not only you can say that you can contribute to the society. So my dear friend, social relationship, emotional well-being, quality environment, personal safety, belongings, financial and material well-beings, and then you will be able to work independently. Definitely, you will find a quality life in your patient. So this is umbrella care. I have made this, designed this symbol, umbrella care. Any person of any discipline can come together for the relief of the pain of a cancer. You may be of Ayurveda, allopath, traditional, sports, yoga, siddha, Veda, cultural, spiritual, music, homeo, socio, naturo, Unani, any pathy, any person who can contribute of his wisdom to pacify the pain of a cancer sufferer. That is the umbrella care, and where the cure is not possible. So care can contribute. So care beyond cure is the umbrella care. That is the my narration and my motive, and that I used to appeal to all of you. With these, my dear friends, we have come together. It is just a beginning. आज हम जुड़े हैं, शुरुआत हुई है. Keeping together will definitely be progressive, and when we start working together, definitely we will get success. So my dear friend, understanding pain is that much important to more important to treat a patient pain in cancer. So I'm thankful for your patience hearing and giving me opportunity to share my experiences regarding the topic.
thank you to the organizers, and especially my thanks to Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Amanyu. Really, one thing I would like to say there, that I opted at Sangyaharan only because of the motivation of Amanyu sir. He was the clinical registrar and I was in MD first year. On his suggestion, I opted this Sangyaharan, and by his blessings and guidance, time to time, I could come to this point, and today, in his presence, I have dared to say something regarding the topic, and thank you to organizers and especially for the Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you all. Thank you. Thank you very much, sir. I think it has been a very tremendous day today because we have learned so many things, and especially cancer pain management. I think as far as Ayurveda point of view, we need to learn a lot of things. And since you have been working in this field for last 32 years, as you told that our Honorable Vice Chancellor, sir, motivated you in this regard, and you have taken pain to treat the pain of the cancer patients. And since this long journey, you have come to know so many things, and how I think before you, though I will explain so many things in this regard as you have explained in your lecture as well. But since you have taken up this issue, we could come in a better way that how we can manage the cancer pain through Ayurveda. So no doubt it has been a very fruitful experience today, that we as far we can develop a confidence, self-confidence in such a way that we can manage cancer at our own on behalf of Ayurveda also. So we are so much thankful of you, sir, that you have spared a lot of time and has explained all this procedure in a very simplest way, so that each and everybody can understand the procedure and the system to manage the pain. Thank you once again, sir. Now, I request if there is any query, you are welcome to ask Professor K.K. Pandey, sir. If there is any query, any of our audience can raise their questions. I think Dr. Sharayu Kore is there. She's willing to inquire something. Please unmute yourself, please. Please unmute yourself. You are not unmuted. Yes. Yes, sir, it was a very wonderful derivation. Srotogamitva is definitely there. Excuse me, So when there is excuse me, please introduce yourself first so that everybody can know about you. Yes. Okay. I'm Dr. Sharayu Kore, professor from Sumati Vaishya Ayurveda Mahavidyalaya in Department of Dravyagun. So I would like to say that how we can manage the patient in a terminally ill stage for getting pain relief, whether this Vijaya Kalpa, which is coming up, Hem Street, is coming up very fast. Whether have you tried this drug, and if yes, what are the results? Is it necessary to use this Vijaya in terminally ill stage? Okay, thank you, ma'am, for your very nice and the topic which I used to ask on many forums. Government has given us permission to take Vijaya and work on Vijaya, but not for morphine. But Yes. best of my knowledge, because application of Bhanga cannabis
have a potential role in the management of cancer-like pain. Not only this, I have gone through a topic related to cannabis, and the lady, she was herself sufferer of CA neck. She worked on that. Somewhere she gained the article regarding the cannabis, and then she had started to take that cannabis in her own, and she was cured after 6 months. Then she designed many formulations related to that, and now we have advised our patients that if possible, you get a pure cannabis, not from the market, because that is doubtful and adulterated. A patient who himself or herself is suffering from many more systemic disorders may develop other complications. If it is procure the fresh leaf, prepare accordingly, and give in any form whatsoever the patient can take, and but that to be in a prescribed dose as per the text of Ayurveda, not from the market. That is adulterated. Many seeds may be there, many other grass may be there, or many other things may be there. So that I never advise those patients. If you can able, you can identify the patient, plant of the cannabis, then have a fresh juice or leaf, make a culk or swaras, then give the patient as per the rules. And definitely that is having a good result, not only to pacify the pain, but it is also able to cure the cancer. I was working with the Department of Science and Technology, and now, due to either reasons, it has been break. But sooner or later, I will work on this one, on morphine receptors and cancer cell therapy. Thank you, ma'am. Any other? I think Dr. Sharyu has now been satisfied. मैम से मेरा एक सवाल मैं कर सकता हूँ इंटरेक्शन सर प्लीज आप द्रव्यगुड़ में है, मेरा सौभाग्य है, अभी बालकृष्ण जी से उत्तराखंड में मुलाकात हुई मेरी, मैंने भी उनसे सवाल किया कि सुश्रुत जी सर्जरी कैसे करते थे, और हमारे गवर्नमेंट ने 58 सर्जिकल प्रोसीजर को अलाउ किया है। वो कोई लकड़ी थी जिसको सुंघा के बेहोश करते थे या होश में लाते थे, या कोई औषधि थी जिसको वो देते थे। मैंने पीवी शर्मा जी से पूछा, आचार्य चुनेकर जी से पूछा, और बहुत सारे लोगों से। उन्होंने कहा बेटा मेरी उम्र तो गई, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, तुम ही लोग कोई ढूंढो। तो मॉडर्न मेडिसिन में जो फार्मास्यूटिकल्स का डिवीजन है, वो दवाई ढूंढ के देता है, तब वो लोग यूज करते हैं। हमारा फार्मास्यूटिकल्स हमको कब देगा? तो पेड़ का नाम बता दो, मेरे साथ कोलैबोरेट कर दो। आई हैव ए वेल डेवलप्ड ड्रग डिजाइन लेबोरेटरी इन माय डिपार्टमेंट, वर्किंग विद दैट। अगर आप कुछ लगता है कि ऐसा प्लांट है जिसमें लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी हो, या उसमें ऐसी सेडेटिव्स हो, या ऐसा एनाल्जेसिक हो, प्लीज हेल्प मी एंड ट्राई टू कोलैबोरेट। You can have my address, and then please collaborate. I will be thankful forever up to the end of my life if you can provide me any drug having this property. Ma'am, please unmute करें एक बार। Ma'am, please unmute yourself. Ma'am, unmute yourself. Yes. This Vyavai, Vikasi, Ashukari are the properties which are used as anesthetics in previous days. And so we have that potential. We have to search from this drugs, and it can be, there are certain drugs when, if it is, if the drug is eaten prior, like suppose Gudmar is there, it inhibits the taste of sweet. So if you eat anything sweet after Gudmar, you will feel it that you are eating sugar, but it is just like a, you can think that it can be any like stone, which is very tasteless. So this is a partial inhibition of this rasa sanya. Similarly, there can be some of the other drugs, and with a proper discussion with the botanists have such knowledge
that ethnobotany and the people who are studying botany, they have such plants. So we can find the root in this from that plant into the Ayurveda, and then we can try to find. There are some chances that definitely we can get some of the drugs for that purpose. Well, thank you, ma'am. But I would like to interrupt here. Many more drugs, as you mentioned, that they are having Bevai, Vikasi, Asukari properties. Can you convey anyhow those which are those Surely, drugs sir. Yeah, which I will find. व्यवहार विकास की आशुकारी भंगा are फेनम चाही समुद्भवम बताया ही है उन्होंने. एंड ये जो मध्य जो बताया है, मध्य के जो जगल सूरा, ये जो ग्रेडेशंस बताया है, so that gradations also can be tried to find the anesthetic effect. जो सूरा, जगल, मेदानी, मेदिनी, ये जो हमारे को जो 6 gradations में जो मध्य के ingredient that can be separated by chromatographic way, and that matter can be tested for analgesic effect. First in the animal we can try, and then we can also go for then in human. So because madhya was one of the major constituents which was it was given prior to surgery, and then the surgery used to conduct, and that also has Vyavai, Vikasi, Achukari. So different types of Madhya Varga should be studied from this aspect. That can be done. Okay, I have tried to analyze those, but the question arises: the preparation of Madhya, that is specific Madhya, which was being used by Acharya Sushrut, and that he has mentioned Praksas Karmanasteshtam Bhojayat Aturam Vishak. It was mentioned there, but nowhere it has mentioned that what were the ingredients to prepare that specific madhya and what layer of that madhya was being used. Sura, Mare, Gad, Jagal, and many more is what I learned during my graduation, undergraduation. That is to be analyzed, and there must be some sort of collaborative work from the department of Dravya Rasastra, and a clinician who wants to work in this direction. So you can take lead and you can collaborate. It is just beginning. When we work together, definitely we will get something, and when start working, then definitely we'll get success. So thanks Yes, for sir. nice You can say, you can give your commitment. so we can communicate and collaborate in future, definitely, sir. Thank you, Dr. Rakesh ji. Sir, another audience, another person from audience, Dr. Subrata Kumar is also raising his hand to ask some questions. Dr. Subrata Kumar Das. Welcome, sir. Yes, sir. Good afternoon. Please introduce yourself, sir, please. Yeah, sir, I am working as a capacity of medical officer with Government of Uttarakhand, and I was also in BHU from year 2008 2010. I was doing PG diploma in drug standardization. Professor SG Dubey, sir. So my question is, you mentioned that you have treated a patient of SCC carcinoma. That patient was from Nepal. So, sir, can I ask what drugs or what medicines you prescribed her? And you mentioned that she didn't taken any allopathic medicine. So that was quite wonderful. My dear friend, first thing, that was a squamous cell carcinoma. I used to prescribe some earlier preparation from immunomodulators, anti-cancer drugs. There are 12 drugs there. Second one, the curcuma langa in crude form, not from the market but from the farmer's house, and some rasausadis like Swarna Basanta Malti, and for pain, Swarna Gugulu, and Gugulu, other preparations along with the Agni Chikitsa, and that is the Arogya Bardhani, and the decoction of 13 leaves with that for oral intake, and for local decoction of Panchvalkal Kashaya
4 times in a day, and the diet which he can swallow easily, and that he was taking. Result is there, and the patient's record is in my office. Sir, did you mention? Yeah. Sir, did you mention kumkum kesar? Pardon? Sir, did you mention kumkum kesar? No. इतना कॉस्टली होता है, कुमकुम केसर कहाँ से आएगा? ओरिजिनल मिलेगा नहीं, ओरिजिनल मिलेगा नहीं। आप ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के ओरिजिनल केसर तो मुझे मिली नहीं। अभी एक आता है कैंपस में घूमता है, वो कहता है मैं कहाँ से अरब से वो हींग लेके आया हूँ, स्मेल बहुत महकती है, घर ले जाके रखो तो कुछ नहीं महकता है। सर सदाबहार या सदाबहार का सर यूज किया? सदाबहार सदाबहार इज विनका रोजा, द first chemotherapeutic drug vincristine was isolated from the Sadabahar, and there are many more varieties, and now this artificial cultivation is there, but the original Sadabahar of light green color leaves, yellow, white and the pink color, violet color, that is beneficial. And I used to give that amount of the ingredient, 1/4 of that ingredient overall. And because vincristine is some sort of the nephrotoxic, so उसमें हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट का रीनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है तो हम फिर वहाँ पर हेपेटोरीनल कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पर सदाबहार के अमाउंट को और कम करते हैं। बट सदाबहार आई यूज्ड टू ऐड इन माय डिकॉक्शन फॉर ओरल टेक। सर इट्स फ्लावर एंड लीव्स, ओवरऑल जो मिल जाए पेशेंट को, नॉट ओनली द लीव्स, नॉट ओनली द फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट दैट मच अबंडेंट, सो एनी पार्ट, क्योंकि सब पार्ट में इसके विनक्रिस्टिन है, तो जो भी पेशेंट को मिल जाते हैं उनकी जौकुट बना के रख के छाया में सुखा के, फंगल उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको ड्राई करके उसमें 1/4 ऑफ ऑल, अगर हमने बाकी पत्तियां 2 किलो लिया है तो इसको आधा किलो लेने हैं, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट से दोष धातु मल मूल जो बताया है उसको भी कंसीडर करता हूं, और उसमें मॉडर्न पैरामीटर भी लेता हूं, तब प्लान करता हूं कि इसको कौन सी ड्रग कितनी मात्रा में दी जानी है। और आप तो द्रविड़ में ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन में गए, तो कुछ आओ जुड़ो हमारे साथ, कुछ करो, बनाओ, बताओ। उत्तराखंड में अगर बालकृष्ण जी से मुलाकात हो तो बोल रहा पांडे सर आपको याद किए हैं, प्रणाम किए हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा मैंने क्या याद किया है। वो बस इतने समझ जाएंगे प्रणाम करने से ही। भाई उनके यहाँ बहुत अच्छी लेबोरेटरी है ना, हमारे पास है नहीं। सर आपका नंबर मिल सकता है? कैन आई हैव योर नंबर? बिल्कुल बिल्कुल भैया, स्क्रीन पे डाल दो सैलन जी मेरा नंबर। हाँ बोल दो। जी सर जी। आपका नंबर सर? हाँ मेरा नंबर है और एड्रेस सब उस पे आप फ्लेयर पे डाल। हाँ, मेरे से भी तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है बाद में मैं दे दूंगा, मेरा नंबर आप ले लीजिए। या सर आपका नंबर दे दो, शेयर कर दो सर। श्योर श्योर, मेरे तो मैं दे देता हूँ सबको नंबर। जी सर, हाँ नोट कर रहे हैं सर। जी सर, जी सर। एंड 83188, ये तो जियो वाला दे रहे हो, दोनों नंबर दे दीजिए। हाँ 83188 84863 863 ठीक। और दूसरा है 94152 जी 51556। जी सर, थैंक यू। ओके सर। सर एक दो क्वेश्चन और थे। तो दूसरा सेटअप यहाँ पे पीएचडी वाई स्टूडियो में होने जा रहा है 10 मिनट बाद। हमारा टेक्निशियन बोल रहे हैं कि सर आपका 1 घंटे का था, ये 1.5 कितना हो गया? लेकिन लोगों की क्वेरीज बहुत है सर, अगर आप फटाफट सुलझा सके तो बोल दो, पूछ लो सर, 2-3। चल पूछ लीजिए। हाँ, डॉक्टर सरिता जैन थोड़ा जल्दी पूछेंगे क्योंकि सर का और भी एंगेजमेंट है एक जगह। डॉक्टर सरिता जैन आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्ते सर। हाँ, परिचय देते हुए। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर, मैं डॉक्टर सरिता जैन हूँ, राजस्थान उदयपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे एक पेशेंट है जिनको मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर था, उनको डायग्नोज ही हुआ पेल्विक पेन से, तो उनका ऑर्किडेक्टोमी कर दिया है और एंटी एंड्रोजेंस पे है पेशेंट अभी, बाइकेलुटामाइड।
तो क्या ऐसे पेशेंट को एनर्जी के लिए हम लोग अश्वगंधा दे सकते हैं? अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो नहीं देगा सर? नहीं, अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है ऐसे पेशेंट में। मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट में, एक पेशेंट था मेरा, उसको अश्वगंधा के प्रिपरेशन हम दे रहे थे, लेकिन उसको इनिशियल स्टेज में उसे फ्रीक्वेंट वाइडिंग होती थी, बाद में उसको ड्रग लेना शुरू किया एंड्रोजन स्टेरॉइड्स के साथ में, तो उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो गया। इंजीनियर था और कीमोथेरेपी एंड्रोजन स्टेरॉइड्स के साथ में उसको ये डेवलप शुरू हुआ। और अल्टीमेटली फिर मैंने भी देखा कि ये तो कुछ दवाएं वहाँ से दूर से कहीं से कोई वैद्य जी चला रहे तो उसको अश्वगंधा के प्रिपरेशन शतावरी अश्वगंधा देते थे। बट अगर आपको बल्ले के रूप में देखना है तो बहुत सारी हमारी बल्ले औषधियां हैं, उनको आप दे सकते हैं। जिसमें डाउट है हमें उसको बचना चाहिए। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर क्या मैडम, आप आप कोई में किताब लिख बता रहे दूं? हैं इस कैंसर के बारे में? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगी। और उदयपुर की मैडम के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं उदयपुर का ही प्रोडक्ट हूँ। जी सर, जी सर। ये राजस्थान का नहीं सर, उसके पहले मैं सदा शहर में रहा हूँ। 81, 82 में संडे के दिन मेरा एडमिशन हुआ था। और उसके बाद 85 में मैं उदयपुर गया, क्योंकि 5 कॉलेज थे, 5 में टॉप करता था, तो उदयपुर चला गया, वहाँ ट्रांसफर बेस पे। और फिर फाइनल भी उदयपुर से किया था 85 में। अभी 2 साल पहले प्री कोरोना में गया था, वहाँ कॉन्फ्रेंस महेश जी ने कराया था। ये हमारा सौभाग्य सर। अभी भी वो कर ग्रुप में मैं जाऊंगा। जी सर। तो सर एक दो क्वेश्चन और लें या फिर उनसे बाद में इंक्वायरी ले लें सर? आप बताएं, एक दो क्वेश्चन लें या उनसे मेल पे ले लेंगे? जल्दी से सर। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, अगर आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, आपने हैंड रेज किया है। वैद्य अहमद सवानी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपने रेज किया हो। हाँ, जल्दी पूछें प्लीज, उनको सर को जल्दी थोड़ा आप रेज करें। Yes, sir. Good afternoon, sir. This is Vaidya M.S. Savani here. I am an MD Rashastra scholar from Goa Ayurveda College, Shiroda. So my question is in regard to that particular Vijaya you were talking about. It has a role in palliative care. So sir, market में जो त्रिलोक विजय वटी है और जो विजय प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे लीफ बेस्ड प्रोडक्ट हैं। सो बेसिकली अगर हम लक्ष्मी विलास रस देखें, एक पार्ट जो है नारदीय लक्ष्मी विलास रस का, उसमें विजय के सीड्स यूज किए गए हैं एंड दैट इज ऑल्सो बीन यूज फॉर कैंसर पेलिएटिव केयर। तो आइडियली सर आपके अनुभव से या आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा रोल किसका है, लीव्स का है या सीड्स का है? देखिए, ऐसा है कि अभी मेरे पास ऐसे कोई प्रिपरेशन, बट आई यूज टू प्रोवाइड माय पेशेंट प्रिस्क्राइब स्वर्ण बसंत मालती रस स्पेशली फॉर द डाबर कंपनी. Earlier there was a big debate on the officinal parts used for the preparation of the cannabis based drugs and what part be taken. We just can't challenge that this purity of a drug, because 15 रुपए के पैकेट को लेके वो वहाँ से सरकार खरीदती है और उसके बाद बहुत सारे हर्डल्स को पास करके वहाँ पहुँचती है जहाँ पे ड्रग बनती है. कैन यू इमेजिन द प्योरिटी ऑफ द ड्रग? Absolutely. तो उसमें क्या हो सकता है, उसके डेंटल में क्या हो सकता है. अब उसके डेंटल को तो वो क्लोथ बनाने के लिए ले जाना शुरू कर दिए हेम्प निकाल के. तो अब जब बात आती है प्रिपरेशन की, तो उसमें कितना परसेंटेज अडल्ट्रेशन होगा इन अ लार्ज स्केल टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग. बट इफ यू वांट टू रियली हेल्प योर पेशेंट, you procure pure drug from your garden and then prepare accordingly and use to prescribe and provide your patients from your own self. Then we can say that this formulation or this officinal part has an authentic property. Sir, one small last brief question. This is a clinical case which I have recently got in one of our OPDs. The patient is a known case of salivary gland, malignant salivary gland, adenoid cyst carcinoma. And so the patient is complaining just the left side hard palate and it's painful. And the pain is such like that, it's like a triggering pain. It's like an attack when it get. So what should be done in that case? And the patient is recently diagnosed with that. मैंने आपको बताया ना कि जब पेन का डेफिनेशन बता रहे थे, पेन की कॉम्प्लिकेशंस बता रहे थे, बताया ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. So if you
fever heart, the characteristic features are the trigeminal neuralgic pain. ऐसे केस में सर उनको हेमी मैंडिबल में करा देना चाहिए. अर्ली स्टेज है, आधा मैंडिबल काट के निकाल दिया जाएगा और उसके बाद उसको पेशेंट को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने के बाद पेन बंद हो जाएगा. अभी स्टार्ट है, वो बिगनिंग है. उनकी ओपिनियन लेके हेल्प लेनी चाहिए. आई एम नॉट इन फेवर टू अवॉइड सर्जिकल इंटरवेंशन बिकॉज बोनी मेटास्टेसिस इज द वेरी फास्ट. फर्स्ट वन इज द ब्लड, सेकंड वन इज द बोनी मेटास्टेसिस. आप बोन को जितनी जल्दी होके निकाल दो, नहीं वो पूरी बोन से जुड़ी होती है और उसको करना, इसलिए अस्थि अर्बुद को एकदम असाध्य बोला है हमारे आचार्यों ने. मॉडर्न में भी ऑस्टियोसार्कोमा को इनक्यूरेबल बोल दिया है. तो जितनी जल्दी हो सके उनको बोलो कि इसको पहले निकाल के फिर कन्वेंशनल थेरेपी पे आ जाए, फिर पैलिएशन पे आ जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. अब मैं जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इस कार्यक्रम के हमारे को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर हरी सिंगल, जो हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे कहूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें कार्यक्रम के अंतिम चरण में. डॉक्टर हरी सिंगल. हाँ, थैंक यू सर. अखिल मुल्लाकरम व्यात्तमेन चराचरं तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः. Today is very innovative day, and today we have an eminent personality, Dr. K.K. Pandey sir, who is the HOD and head of the department of Sangyaharan, faculty of Ayurveda, IMS BHU. And sir, your lecture is very interesting, and on the cancer pain management and challenges and perspective in Ayurveda. Sir, I would like to pay my gratitude to you, sir, to give such a wonderful lectures and sort out numerous queries which is asked by different eminent teachers as well as the scholars. Sir, I would like to pay thank you from my heart to sort out all the things which are asked by our scholars as well as the teachers. Thank you very much, sir, to give the times and to give the such wonderful lectures to us. Then I would like to pay my gratitude to Honorable VC sir, who always inspire us, who always bless us, who always doing all the hopes and arrange such lectures by the across the India and provide the best faculty to us to listen his or her experiences. I would like to pay my gratitude to Honorable sir for your kind blessing. I would like to pay my thanks to Professor M. Dinkar sir to bless us today's lectures. I would like to pay my thanks to Dr. Nidhi Srivastava ji, who are the HOD Department of Rachana Shari from Bhopal, Professor Kalpana Raje ji, head of the Department of Shari Rachana Jamnagar, Dr. Govind Meena ji, Dr. Sitaram ji, Dr. C.K. Dikshit ji, Professor Pehlad Raghu ji, Dr. Subruto Kumar ji, Dr. Madan Mohan Jha ji, Professor Govind Shukla ji, Dr. Shreya Kore ji, Professor Mahendra Dr. P.P. Vyas ji, Dr. Devendra ji, Manisha ji, Dr. Rajaram Agrawal ji, Dr. Chandra ji, Dr. Manoj ji, Dr. Rajendra ji, Dr. Gyan ji, Shwaram ji, Dr. P.P. Vyas ji, Dr. Dinesh Rai ji, Dr. Sharma ji, Nidhi Avasthi ji, Dr. Rajesh Gupta ji, Dr. V.D. Sharma ji, Dr. Ritu Kapoor, Dr. Govind Gupta ji, Arun Dadi ji, Dr. Jogvendra Rao, Dr. Vijay Pal Tyagi, Dr. Pramod Mishra ji, Dr. B.N. Sharma, and Dr. all PG scholars. But not least, I would like to pay thanks, especially Dr. Rakesh Sharma ji, who is the chief coordinator of Center for Human Resource Development, that is the CHRD, who always brings such nice lectures to us. I would like to pay my thanks to sir, and I hope in future you also brings such nice lectures on these platforms and benefit it to us and to update our knowledge. Thank you very much, sir. Thank you all audience for being here with us. Tomorrow we will meet with a new lecture. About that, Dr. Rakesh Sharma ji will inform you. Tomorrow we are organizing another lecture. It is being organized in collaboration with IIT. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And we are organizing another lecture in collaboration with the IIT Emerging Technology Trends. Dr. Professor Manoj Chaudhary ji will be there with this lecture in this program. Tomorrow we will meet at 11:30 once again. I would like to thank all the participants who
could not be named due to not identification of themselves. I would like to thank each and everybody, and especially Dr. Harisekal and his IT team, who has taken so much pain of organizing this lecture technically. Thank you very much.